What do you see? I think symmetry is something we already have some idea about, right? Look at these tile patterns. I think they have some repetitive features. They have, some repetition in structure. They are in a kind of beautiful, the way their structures are repeated. For example, look at this flower, which is, of course, a natural thing. It is present in nature. So nature also loves symmetry. You can see that there is a pattern in that flower. Look at the starfish. Even look at the body of dog. It seems that it can be, cut into two equal halves, like human body, right? And then this is a buckyball. This is a material that was discovered in, I think early 60s or 70s, and it has 60 atoms of carbon atoms in one molecule, which adopt the shape of a football, right? And then there are some other patterns as well. For example, look at some of the buildings which humans made. For example, Taj Mahal, or even our SSC building, and some flowers and the patterns of the leaves over the plants, even this butterfly. So there is, in man-made world or in, nature, we see things to be symmetrical, less, symmetrical in a way. Or symmetry is something that is the fundamental property of nature. It seems that nature likes to, create things in a symmetrical fashion. So I'm using this term again and again, and it is making to some idea in your minds, but perhaps you will not be able to define what symmetry means. So we take the help of the Cambridge Dictionary, and what it says, symmetry, I mean, just a word from the English language. So it says that it is the quality of having parts that match each other, especially in a way that is attractive, or similarity of shape or contents is what we call this symmetry. If we keep this definition in mind and we use our intuition, we can answer some simple questions. For example, if I ask you all, what do you think, which of these two molecules is more symmetrical? Even though you do not know about anything, or you cannot define symmetry at the moment, but at least you can, looking at the structures, you can define which is less symmetrical, which is more symmetrical. This is a subjective way of defining symmetry. Okay, qualitative way of defining the symmetry. So, what do you say? Sir, nitrogen, I think, is more symmetrical. Nitrogen so molecule. Kiran says N2 molecule on the left is more symmetrical. So I would like to know other thoughts too. Let's take Adiba. What do you say? Sir, I think like both are symmetrical because both are in one plane. Mm-hmm. Okay, but if we compare, and if I ask to choose one, then obviously nitrogen. Nitrogen. Okay. Okay, let's take the opinion from Amal as well. Amal, what are your thoughts? Sir, I think the nitrogen would be more. Great. Waris, do you agree? Yes, sir. Okay, so let's say those who agree with this statement that N2 is more symmetrical than CO, please, hands up. Raise your hands. One vote from Moaz is okay. Let's see how many hands up. 5 hands, 8, 9. Oh, this is so 12 hands up so far, right? And एक किसी ने हाथ नीचे कर दिया. मेरा ख्याल है there's a confusion in thought or what? Okay, so अक्सरियत आपकी ये कह रही है, you can lower your hands. So yes, although in a subjective way, we somehow are able to use our intuition to say which thing is more symmetrical than the other one. Let's practice, keep practicing this thing. And if I ask you to compare a triangle with a hexagon, both are flat structures. Ignore these double bonds or whatever lines. It's a triangle versus a hexagon, both are planar or flat structures. Which one is more symmetrical now? This is a bit tricky now. If you're able to answer, it's fine, but if not, it's okay.
will see ways or find ways how we can compare. Okay, Huraina. Sir, I think both of them are symmetrical, but the axis of symmetry is like different. No, the question is which one is more symmetrical? You need to pick one. Hexagon, like both of them are symmetrical. Hexagon. Hexagon, okay. Moaz? Right, sir. So we'll, another way could be that we count lines of symmetry, and then we can say that there are actually more lines of symmetry in hexagon, so it is more symmetrical. Okay, Amal? I was actually of the opinion that the triangle might be more symmetrical. Triangle. So there is a mixed opinion at this stage, which is okay. It should have been. That's why I gave it here. So I knew there will be mixed opinion on this one because this is a bit complicated. So coming back to Moaz, you're right, but you know, we are keeping things simple at the moment because we do not know, we assume that we do not know anything about the elements of symmetry so far. Okay, so that was a bit tricky and you were confused that triangle is more symmetrical या hexagon ज़्यादा symmetrical है. लेकिन अगर मैं एक और structure यहाँ पे लेके आऊँ और आपसे पूछूं कि अच्छा इन तीनों को compare करें. Now, what would be your choice? Triangle, hexagon, or circle? Which one is the most symmetrical? Now, okay. Who says circle? So there are 3 hands. Amal? जब आप बताइए प्लीज. और वारिस? हादी? सर्कल ज्यादा सिमेट्रिकल होगा कि इनफिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं. Varis says the circle is more symmetrical. Hadi? I think that if we rotate on any angle, circle would give us the same shape, so that is more symmetrical. Okay, so you say circle is more. So right now we do not say why, but you know what your intuition says. Okay, so circle is more symmetrical, and in fact, circle is amongst the most symmetrical objects we know. अच्छा, अब इसको हम ले आते हैं कुछ molecules के ऊपर. For example, if I ask you to compare these 2 things with each other, remember that these are some complexes of platinum. This is called tetrachloroplatinate. Second, because it has a 2 negative charge, and this is diamine dichloropplatinum 2. Okay, so these both are some compounds. This one is on the right is called a cisplatin. It's a famous anti-cancer drug, and this is basically synthesized from this molecule, which is tetrachloroplatinate. So what do you say now? If you compare 1 with 2, which one do you think is more symmetrical? 1. So 1. How Huraina? Sir, because like the 4 atoms that are attached to the central atom, they're all the same. No, just say which one is more symmetrical. Explanation I will ask. First one. You mean the structure 1, right? Okay, again, इसमें हम intuition use कर रहे हैं और इसमें it looks like कि you know कुछ चीजें जो है ना वो more symmetrical हैं. For example, now we are in a tetrahedron, or this is a tetrahedron, and what I'm going to do okay, I'm changing the atoms which are attached to the tetrahedron. For example, if I replace hydrogen, 3 hydrogens with 3 chlorine atoms, and if I, you know, bring 3 different atoms here instead of all chlorines. So let's compare the first 2. What do you think? Left or right? Which is more symmetrical? Left. Left is more symmetrical. Okay, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं कि Mahnur, आप बताइए, what do you say? Left or right? Methane, or the other one is called chloroform, you know, which is the anesthetic agent, chloroform. Right one is chloroform, left one is methane. Left, okay. और अगर मैं एक और structure लेके आ जाऊं जिसे हम ये कह रहे हैं, which is you know, all 3 atoms are now changed. In fact, it contains
4 different atoms. All 4 atoms attached to carbon are now different. And we can see that this is less symmetrical to the other 2 structures on the right. So abhi tak ye jitni bhi humne practice ki hai, we used a qualitative approach to answer the question which structure is more symmetrical. But in this course, we will not use the qualitative approach. We will try to quantify the symmetry that is present in a structure. Okay, so what we'll do, if we are comparing a triangle with a hexagon, what will we do? We will quantify the symmetry in a triangle and in a hexagon, and then compare and answer which one is more symmetrical. Okay, so we need to have some quantitative analysis, some quantification of symmetry. Okay, हम कह रहे हैं ना कि triangle is less symmetrical than the hexagon. कितना कम symmetrical है, कितना ज़्यादा symmetrical है. It should be more quantitative instead of qualitative. So this course is all about how we can quantify symmetry, which is present in shapes or molecules. And let me tell you that it is the elements of symmetry elements that we use to quantify symmetry. And there are some types. If we talk about just the molecules and the symmetry present in them, we have 5 elements by which we can quantify the symmetry. First is called the plane of symmetry. It is given a symbol sigma. Then we have a proper rotation axis. It is Cn. Then we have a center of symmetry, identity, and improper rotation axis. These are 5 things. We'll talk about them in detail, what these things are all about. But remember, these 5 elements help us quantify symmetry in molecules. But if we talk about crystals, which are highly ordered solids, we would need 2 additional elements of symmetry to discuss their symmetry, to quantify their symmetry. Okay, and they are glide plane and screw axis. These are the 2 additional symmetry elements that we need to discuss or quantify symmetry in crystals. Okay, so since now we know it is the symmetry elements by which we can quantify symmetry, let's do that. Let's try to quantify symmetry. अच्छा, अभी तक पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने ये कहा था कि कि depending upon the steric number, we can define shapes of various molecules as linear shape, right? Tetrahedral, square planar, octahedral, and so on, right? We did that. ये मसलन आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is linear, and then this is tetrahedral, square planar, and octahedral. And you also might remember that it makes sense when all the atoms or groups attached with the central atom are same, then structure will be perfect, regular structure. But if we change the atoms, for example, if it is L at one end, and let's say the other one is X, which shows that both atoms are different, then there will be some distortion in the structure, but it still be basic linear structure. And in tetrahedral, basic geometry will be tetrahedral even if we change all the atoms. Okay, if we all the groups which are attached with the central atom, if we change them, all are different elements, different groups, then it will still be a tetrahedral, although we know there will be some distortion. तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि although we are calling them tetrahedral and square planar and octahedral, even if all the groups which are attached with the central atom are not same, तो symmetry की जब हम बात करेंगे तो symmetry में हमें पता होगा कि कुछ जो structures हैं which though appear similar, they might be different, or उनकी symmetry different हो सकती है. For example, BF3, it looks like it's a triangular या trigonal planar structure है, right? And we are comparing a molecule which is BF3 on left hand side, and at the right hand side it is BHF2. So now we have changed one fluorine with hydrogen. Basic geometry is still trigonal planar, but their symmetry properties has changed. And it makes sense because in BF3, all bond angles, BF bond angles, are of same length. Their angle is 120, so it's a perfect trigonal planar. But here we see that
two of the angles are 121 degree and the other one is slightly lower, 118. These two bonds are shorter as compared to the BH bond, which appears longer. So, you know, symmetry, it has a relatively less symmetry as compared to the other structure. And how it is evident? From the bond lengths and bond angles. Okay, तो ये सारी चीजें हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो कि बॉन्ड एंगल्स की बुनियाद पे या बॉन्ड लेंथ्स की बुनियाद पे जब हम बात करते हैं तो BF3 seems more symmetrical than BH2F2. Again, this is a qualitative approach, and this doesn't tell us how less symmetrical BHF2 is as compared to BF3. So let's jump back to you know कि जो हमने symmetry elements की अभी हमने बात की थी और मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा, ठीक है? So let's talk about the symmetry elements. और जो पहला symmetry element मैं आपको बताने चाह रहा हूं उसे हम कहते हैं proper rotation axis, ठीक है? This is called the very proper rotation axis, and we give it a symbol CN, और n को हम define करेंगे कि वो क्या चीज है. The example I would like to start with is BF3. We just mentioned here. BF3 को हमने लिखा था वहां पे और अब मैं आपको बता रहा हूँ. It can be, it is very similar to a triangle, क्योंकि exactly it's a planar triangle, ठीक है? और इसमें हमने, अगर आपको ये बताऊं, मेरे सामने दो तीन तरह की चीजें हैं. I have this model of this BF3. These red are all the fluorides that are attached with the boron in the center. Okay, so ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. It's a flat molecule, यानी planar है. ये है इसका plane, यानी my hand is a plane, and it fits perfectly, sticks perfectly with this plane. ठीक है? It's not a three-dimensional structure. ठीक है? जैसा कि ये, this is not a planar thing, right? But this is a flat planar molecule. All molecule, the whole molecule lies in plane, इस plane के ऊपर, ठीक है? आप देख सकते हैं, just like a wall. Okay, so अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि there is an imaginary point, मैंने आपके लिए अभी बैठे बैठे एक ट्राइंगल भी बनाई है, ये आपके सामने ट्राइंगल. अच्छा, इस ट्राइंगल में एक जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. वो क्या प्रॉपर्टी है कि there is one axis that passes through the center, through the boron atom, from me to you. यानी अगर स्क्रीन पे मैं देखूं तो this axis is going into the screen, right? और वो axis इस बॉल पेंसिल की सूरत में आपको नजर आ रहा है, ठीक है? Are you able to see? और मैं इसको शेयरिंग को करूंगा तो are you able to see? Yes, sir. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि there is an axis. एक geometric property है कि there is an axis passing through this central atom. It is going into the screen, ठीक है? और वो उस axis की वजह से इस geometric property की वजह से हम कहते हैं कि there is a geometric property, and that geometric property is an axis. एक line है simple जो कि pass हो रही है through central boron atom, ठीक है? अब हो क्या रहा है? अब आप देखें, सारे एक मिनट के लिए आंखें बंद करें सारे, ठीक है? Are your eyes closed? जब मैं आप कहूंगा कि open your eyes and you will open your eyes, ठीक है? 1, 2, 3, close your eyes. Now open them back. Do you think that I did something to this structure in my hands or no? No. No? यानी इसका मतलब है कि वो जो इनिशियल आंखें बंद करने से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी या जो स्ट्रक्चर थी, आपने आंखें खोली तो वही स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है. Both structures are indistinguishable from each other. But let me tell you, while your eyes were closed, what I did, I hold this structure from here and I rotated it clockwise along 120 degrees. मैंने इसको रोटेट किया है along the axis जो मैंने अभी आपको बताया है कि that passes through the boron. तो ये जो मैंने ऑपरेशन किया है इसके ऊपर, which is action of doing something, उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनी, that is indistinguishable from the initial shape.
तो इस तरह का ऑपरेशन हम कहते हैं कि दैट इज ए सिमेट्री ऑपरेशन. आई जस्ट परफॉर्म्ड while your eyes were closed, I just performed a symmetry operation. और मैंने क्या किया है? इस ऑपरेशन को हम कोई नाम दे सकते हैं. What did I did? I did rotation along an axis. और वो एक्सिस ही आपको नजर आ रहा है. अच्छा, कितने डिग्री की रोटेशन दी है मैंने? 120. So all fluorine atoms are of same thing, but in order to differentiate from one from the other, what I did basically, yeah, let's say I call it 1, I call it 2, I call it 3, and I did a 120-degree rotation, and now the new structure is कि उसमें जो 1 है वो कहाँ पे चला गया? 1 यहाँ पे था. Now this is 1, this is 2, and this is 3. Remember, all fluorines are equivalent. I'm numbering them just to, check के क्या हुआ है, क्या operation हुआ है. So अब देखिए कि it is still a triangle. Although I have rotated along 120 degree, but it is still a triangle. It is indistinguishable from the initial shape. So this action of rotating at 120 degree creates a new shape that is indistinguishable from the initial one. So that's why this is a symmetry operation, or rotation हो रही है at 120 degree. ठीक है? तो अब हम ये कहेंगे कि this structure contains a proper rotation axis that passes through the central boron. ये axis. Yani it has a geometric property. There is an imaginary line that passes through the central boron atom, and then if we rotate along this line at a certain angle, structure repeats itself again and again. मैं ऐसे करता जाऊं, आप देखें रिपीट करती जा रही है. अच्छा, आंखें बंद करें अब आप. रिमेंबर, इसके ऊपर लाइनें शाइनें ना देखें. ओके, आई विल से कि दिस इज फर्स्ट शेप. ये अपने जहन में रखें. And then close your eyes, and then I will say open your eyes, and you need to open your eyes. Okay, this is initial shape. Keep that in mind. 1, 2, 3. Close your eyes. Open. Do you see any difference from the initial shape you saw before closing eyes? Yes, sir. Yes. क्या था? So again, I have done something to this structure. So initially आपने यहाँ पे देखा था, मैंने इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया है. Did this structure repeat itself by this operation? No, sir. So can we call it a symmetry operation? Rotation at 60 degree? No. Initial? No. So you got the idea. Okay. So हमने कहा कि this operation तो हमें पता चल गया. तो हमें पता है कि this geometric property axis is basically a CN axis. Now we need to define what is this N here. So N को define करने के बहुत सारे तरीके हैं. अब आपने बड़े ध्यान से सोचना है कि there are two things, indistinguishable and identical. देखें, मैं हाथ की पोजीशन अपनी इस पे ध्यान रखें. One rotation, indistinguishable. Second rotation, indistinguishable. Let me just move my hand because our awkward position है. आइडेंटिकल पोजीशन. थर्ड रोटेशन जब मैं देता हूं, यानी ये पूरी कंप्लीट 360 रोटेशन है, ये राइट, पूरी सर्कल की मोशन है 360. तो ये 360 रोटेशन में अपने आप को कितनी दफा स्ट्रक्चर रिपीट करती है? वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस. तो इसका जो n है वो 3 होगा. तो इसमें हम कहेंगे कि दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेसिकली 3, यानी n is equal to 3. ये बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं. जस्ट डिवाइड 360 by the angle you are rotating. ओके, 360 को उस एंगल पे जिस पे आप रोटेशन दे रहे हैं आप डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा n की वैल्यू, और n is called the order of rotation. So बोरान में ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? ये जो सेंटर में से बोरान पास हो रहा है 3. सो हम कहेंगे कि बोरान हैज 1c3 एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है,
हमने एक एलिमेंट इसमें से पकड़ लिया C3 एक्सिस, और C3 एक्सिस की वजह से कौन सा ऑपरेशन हमने किया, C3 रोटेशन। देखिए एक्सिस ये है जो पेंसिल है, ये C3 एक्सिस है, ये C3 रोटेशन है। सो एक्सिस इज ए जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इट्स एन लाइन, प्लेन, नुक्ता हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, और एक्शन इज ऑफ डूइंग समथिंग ऑन द स्ट्रक्चर। After that, it becomes indistinguishable from the initial form. ठीक है, आई होप कि यू गॉट दिस आइडिया ऑफ द रोटेशन एक्सिस, यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो हम इसको एक ट्राइंगल की सूरत में भी लिख सकते हैं, बिकॉज BF3 इज जस्ट ए ट्राइंगल। लेट मी ट्राई कि हमने कहा कि 1 2 3 वी गिव इट ए C3 रोटेशन, हम क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी क्लॉकवाइज करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। बहुत सारी बुक्स एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो करती हैं, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें क्लॉकवाइज है। जो भी करनी है जस्ट स्टिक विद वन। अगर आप क्लॉकवाइज के साथ जा रहे हैं तो डू ऑल रोटेशंस क्लॉकवाइज। ये नहीं है कि आप एक दफा क्लॉकवाइज कर दिया, अगली दफा एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि दिस इज C3 रोटेशन, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। नंबर सिर्फ इसलिए हैं, दिस इज स्टिल ए ट्राइंगल, बिल्कुल वैसे ही। अगर नंबर ना लिखे होते तो आप इसमें और इसमें, यानी A और B में आप बिल्कुल फर्क ना कर पाते। नंबर इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि इतना तो पता चले कि हुआ क्या है स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने में रखता हूं। अब यहाँ पे आई थिंक कि आई हैव सम क्वेश्चंस, तो वो अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, कमेंट्स, तो ये मैं उसको लेके चलता हूँ। Do you think that this structure, which is a flat triangle, equilateral triangle है, तीनों इसकी साइज बराबर हैं, although मैंने जब काटा है तो I think it's not equilateral, again I think it serves the purpose. Do you think there is another axis of rotation in this structure besides this central one that passes through the boron? इसके अलावा गौर करें थोड़ा सा। Do you see any other axis by which if we rotate at certain angle, structure can repeat itself? Yes. So, can you show me where is it? G, who want to tell? I see hand from Amal. Amal, please go ahead. Sir, all of the endpoints of the triangle, if you rotate them at 360 degrees, you end up with the same identical shape as you had before. So where is this axis you are talking about? At the point, the three endpoints of the triangle. You mean this in my ये जो shape है यही वाला, ये जो center में है, ये axis है? No, sir, the three endpoints, जो three, अच्छा, इनको हम vertices कहते हैं, vertices, right? Corners, right? ये corner है, second corner है, third corner है। You are absolutely right. अगर हम वो ऐसे पास करेगा, यानी अगर मैं उसको यहाँ पे शो करूँ ना, तो one axis will be here that passes exactly, मेरी drawing थोड़ी सी वो है, तो टेढ़ी मेरी line है here, और इसके अगेंस्ट जब मैं रोटेट करूंगा ना, देखें आपने 360 कहा, गौर कीजिएगा, इज इट 360 अमन? ये देखिए, is it repeating itself? I'm rotating. Guess the angle of rotation. 180, that would be 180, but I meant if you do it like around like this again. Yeah. So if we repeat just 180, इसकी sides दोनों अलग हैं, इसलिए आपको just ignore the sides. तो हमने देखा कि along the vertices there is an imaginary line in axis is there, and if we rotate the structure along that axis, it repeats. So this rotation axis is the structure repeats itself when we rotate it at what angle? 180. 180 degrees. 180. तो इस CN एक्सिस को क्या कहेंगे? हमने कहा था 360 divided by 180 is 2. Yes, so it's a C2 axis.
तो अमल ने एक C2 एक्सिस आइडेंटिफाई किया है। ये कैन यू, अच्छा एक C2 एक्सिस तो हमें ये नजर आ गया। डू वी हैव सम अदर एक्सिस एज वेल? किससे पूछते हैं? उजैर, व्हाट डू यू से? एक ये अमल ने बताया है along this right vertex, ठीक है? Do you see any other? Sir, बाकी दोनों vertices Exactly, you're absolutely right. If there is one axis, the other could pass through the other vertex, ऐसे। और मैं ये आपको बताता हूँ कि now the vertex is here. This is a 180 degree rotation. आप देखें, it is still going, मतलब looking upward. कोई मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ किया है, although मतलब इसकी तो कलर डिफरेंट है ना, लेकिन assume के दोनों साइडें बराबर है, C2. And then we have another axis, जिससे हम कह सकते हैं कि that passes through the third one. तो मैं और उसे हम कह सकते हैं कि that is the third C2 axis. Okay, so we saw that in this boron trifluoride or any structure that resembles a equilateral triangle, there is one C3 axis of rotation and 3 C2 axis of rotation. Right? Do we see any other rotation axis in this structure? There was one here, 3 times C3 rotation. And then we said along the vertices, one C2 rotation, C2 axis, and third C2 axis. Do we see any other axis of rotation in this structure? Not. So हमें पता चला कि इसमें ये C3 rotation axis मौजूद है। मैं अब एक चीज आपको डिफाइन करने लगा हूं, that is called principal rotation axis या principal axis. So if the structure has more than one rotation axis, the one with the higher n is called principal axis. आप मुझे बताइए, principal axis यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या it passes through boron atom? Where? It passes through the boron. So C3 axis is the principal axis in a equilateral triangle. ठीक है, ये चीजें आप सबके सामने। तो हमने सिमेट्री एलिमेंट में जो पहला सिमेट्री एलिमेंट है ना, उसको हमने देखा है कि वो क्या चीज है। ओके, मूविंग नेक्स्ट, इसको हम कीप कर लेते हैं। वी आर हियर, लेट मी टेक ए स्क्वायर हियर, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर आवर पर्पसेस। व्हाट डू यू से? रोटेशन एक्सिस, डू यू सी एनी रोटेशन एक्सिस इन दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज ए परफेक्ट फ्लैट स्क्वायर, ऐसे जैसा कि ये है? Through the center. Through the center, exactly. Through the center. Through the center. ये through the center. और through the center अब आप देखें, at what rotation it will repeat itself? अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको शायद पता, anyway. 90 degrees. 90 degree rotation. 90 degree rotation. So this axis is right there in the middle, और इसको हम कहेंगे कि there is an CN axis. What will be the N? 360 divided by 90 degree पे rotation हम कर रहे हैं 4. So this is a C4 axis right there in the middle. Do you see other rotation axes in the structure?
They're the same one as in the equilateral triangle, like the one where we flip it by 180 degrees and it's the same shape. Your voice was breaking. So do you mean that the one that passes through the vertices, right? Yeah, sir, the one that we did with the equilateral triangle. Yeah, you're right. और ये कौन सा एक्सिस है? See, initial, final. What rotation I am giving to this structure? (180°). 180 degree, exactly. This is 180 degree rotation. So इसका मतलब है n will be 360 divided by 180 is 2. और अगर ये इधर से है तो I think there are two such axes which passes through the axis. If there is one here, there will be one at the opposite end. This is also a C2 axis, right? अच्छा, अब एक और मजे की बात ये है कि इसमें और भी एक्सिस हैं C2 एक्सिस. रिमेंबर जहां पे C4 एक्सिस है, आप गौर से देखिएगा, हमारे हाथ को देखिए. दिस इज C4 एक्सिस जो मैं पेंसिल आपको दिखा रहा हूं. सो आई रोटेट इट, यहां से मैंने पकड़ा, इस पोजीशन को आपने देखना है. I rotate it at 180 degree. देखें, यहां से रोटेट करना शुरू किया, फाइनल पोजीशन ऑफ माय हैंड इज एट 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी है मैंने. इस रोटेशन को क्या कहेंगे? फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये है. सो अलोंग दिस C4 एक्सिस, इसका मतलब लगता है कि देयर एग्जिस्ट अनदर एक्सिस राइट देयर वेयर देयर इज अ C4 एक्सिस, जिस पे मैं 180 डिग्री की रोटेशन भी दे सकता हूं. तो हम कहते हैं कि देयर इज ए C2 एक्सिस राइट देयर वेयर देयर इज अ C4 एक्सिस. तो हम कहते हैं कि दे आर, आई थिंक ये पता नहीं विजिबिलिटी के इश्यूज हैं, तो लेट मी चेंज द इंक, और दे आर कॉल्ड collinear axis. C4 and C2 are collinear. Do you see any other C2 axis in this structure? स्क्वायर की फ्लैट साइड्स पे. Yes, very good. यहां से भी पास हो रहा है. एक अगर यहां से पास हो रहा है तो एक यहां से पास हो रहा है. तो भाई इतने सारे C2 axes हैं. How we are going to differentiate between them? So one is there, right, that passes through the middle, that is a C2 axis. Two are passing through the vertices, and two are passes through these edges. दो इस एज से गुजरते हैं, दो इस एज से गुजरते हैं. तो हम कहते हैं कि the one which is collinear with C4 axis is just C2. Those which are passing through the vertices, they are C2 bar. And those that passes through the edges, they are C2 double bar. So इसका मतलब है कि प्रायोरिटी हमें दी है जो कोलिनियर था C4 एक्सिस के साथ. सेकंड पे जो ज्यादा, अगर देखें ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इफ आई टॉक अबाउट ए स्ट्रक्चर xenon tetrafluoride, इट्स ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अगर मैं इस वक्त वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस में बॉन्ड्स हैं. इसका मतलब है कि देयर आर सम C2 एक्सिस दैट पास थ्रू बॉन्ड्स, या 3 एटम्स में से वो पास हो रहे हैं, ठीक है. तो उसे हम फिर एक बार दे रहे हैं. और जो सिर्फ हमने देखा कि इसमें से पास हो रहा है जस्ट थ्रू दी वन सेंट्रल एटम, उसे हमने C2 डबल बार का नाम दे दिया, ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि देयर कुड बी मोर देन one axis of symmetry in one structure, or it is easier to find them where they exist. What is the principal axis for this structure? C4. C4. यानी P axis क्या हो गया इसका? C4.
सो लेट्स सी के कितने एक्सिस हैं। एक C4 एक्सिस है और इसी के साथ वाला जो है वो एक C2 एक्सिस है, दो C2 बार एक्सिस है, 2 C2 डबल बार एक्सिस। सर जो आपने सेकंड वाला लिखा है ये मुझे समझ नहीं आया। 1 किस C2 वाला? एक्सिस सेकंड वाला। सेकेंड वाला दैट इज द वन दैट पासेस थ्रू द मिडल, राइट। हमने कहा था कि जहां पे C4 एक्सिस है ना, ये वाला, इधर एक और रोटेशन भी पॉसिबल है, 180 डिग्री की रोटेशन, ये वाली। और 180 का मतलब 360 डिवाइड बाई 80, 2, दिस इज C2 रोटेशन, ये वाली रोटेशन। अगेन इधर ये कोलिनियर है, कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसके एक्सेस जो है वो डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि एक एक्सिस से कितने ऑपरेशन जनरेट होते हैं, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आंसर। इसके लिए लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ए ट्रायंगल एंड लेट मी नंबर देम अगेन फ्रॉम 1 to 3 and we see that there is a C3 axis right there in the middle. Let's do a clockwise C3 rotation and we end up here, here and here. Okay, इस पे अगर मैं एक और C3 रोटेशन करूं तो now 1 will be here, 2 will be here, 3 will be here, right? Can we make this structure directly from the one? इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर दें। 1 यहां से यहां पे ले जाना है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कैन वी गेट दिस स्ट्रक्चर, जो कि ऑफ कोर्स हमने आफ्टर 2 C3 रोटेशंस ऑब्टेन की है, consecutive, one after the other. But can we obtain this form directly from this form by any operation? तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्पिन कर दें। देखिए, हम ये करें कि मैं बगैर रुके ये कर देता हूं कि C3 1 times, C3 2 times, and I will end up here in the final structure, जिसे मैं कहता हूं B। यानी मैंने क्या किया है कि C3 twice, C3 2 times मैंने कर दिया है। Remember C3 2 क्या है कि this is C3 1, C3 2, और इसमें that was my 1 position, और आप देखें कि C3 2 के बाद 1 position is here, which is exactly what is expected here, ठीक है। तो C3 2 में आप क्या करते हैं, you are giving 2 C3 direction rotations in a 1 step, ठीक है। मतलब देखें ना, C3 1 है, C3 2 है, ठीक है। हमने ये नहीं किया कि एक दफा C3 रोटेशन दी और एक स्ट्रक्चर क्रिएट की, फिर C3 रोटेशन दी और दूसरी स्ट्रक्चर की। दैट इज अ स्टेप वाइज। एवरी यहाँ पे C3 रोटेशन दे रहे हैं, ये भी एक C3 रोटेशन दे रहे हैं हम, लेकिन जब आप साइमल्टेनियसली एक ही मूव में स्ट्रक्चर को यहां पे लेके जाते हैं तो यू आर डूइंग C3 2, C3 रोटेशंस 2 टाइम्स, ये वाली रोटेशन आपके पास है। अगर आपके ज़हन में ये है तो इसका मतलब है कि हम एक ये भी तो कर सकते हैं, C3 1 2 3, C3 3। Is this a symmetry operation? This structure is identical to the original. It is not a symmetry operation. इसलिए नहीं है कि that is equivalent to another element, symmetry element, जिसे हम कहते हैं identity element. Identity element हर structure के अंदर होता है, इसे हम E कहते हैं। It is action of doing nothing. It is the operation of doing nothing to the structure. क्योंकि पता है कि symmetry के जो concepts हैं वो हमने ग्रुप थ्योरी से लिए हैं,
और ग्रुप की जो कंडीशन है उसमें एक कंडीशन ये भी है कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में ये होता है कि इट इज द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग या इट इज ऑपरेशन ऑफ डूइंग समथिंग के स्ट्रक्चर बिकम्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल आर द इनिशियल फॉर्म, और हम उसको आइडेंटिटी का ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि C3 3 टाइम्स जब हम करते हैं तो इसका रिजल्ट वैसा ही है जैसा एक आइडेंटिटी ऑपरेशन का है, लिहाजा दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, और जब वो होते हैं तो हम आइडेंटिटी को कंसीडर करते हैं, इसको नहीं करते। ठीक है, चूंकि it will be just the doubling of the symmetry elements if their results are same. So out of 2 we just pick 1. So we say that we only pick unique symmetry operations, यानी जिनका रिजल्ट किसी और symmetry operation के साथ नहीं मिलता। मैं इसको फिर एक जल्दी से आपको बता देता हूं कि what did just I try to tell you कि if we have a triangle structure 1 2 3, we give a C3 rotation and we end up here. If we do a C3 2 rotation, the final shape will be C3 1 C3 2. 1 will be here, 2 will be here, 3 will be here. And if we do C3 3 times, we end up in this structure, which is totally identical to the initial one. तो हमने कहा कि because of the presence of a C3 axis of rotation, a total of 3 operations can be performed on this structure. It results in, 3 operations, और वो ऑपरेशन सारे के सारे जो हैं ऑफ कोर्स के रोटेशन ऑपरेशन है। एक है C3 ऑपरेशन यानी रिजल्ट A, एक है C3 2 यानी जो रिजल्ट है B, और एक है रिजल्ट C जो कि C3 3 ऑपरेशन है, रिजल्ट C। लेकिन इसमें से हमने कहा कि ओनली 2 आर यूनिक। थर्ड वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 C3 ऑपरेशन 1 C3 एक्सिस generates how many unique operations? What are their names? C3 and C3 2. Remember, एक जनरलाइजेशन बता देता हूं आपको। Any operation n times, n is always equal to identity. हमने देखा कि C3 3 टाइम किया तो आइडेंटिटी बन गई। हम एक बात अभी तक भूल रहे हैं, वो ये कि देयर वर C2 एक्सिस भी तो थे। मसलन यहाँ पे एक C2 एक्सिस है, इसकी वजह से कितने ऑपरेशंस जनरेट होते हैं? Can somebody tell me how many operations is C2 axis generates? C2 Just operation one, is obvious. I think. Just one. How about C2 2? That's basically the same as the initial. Yeah, that creates an identical shape, or that is the operation of doing nothing or operation of identity. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे summarize कर दी। How much time do we have right now? Is it already up? Okay, so summary मैंने आपको बता दी है कि today we tried to कि C3 operations हमने करके देखे हैं। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि you can do similarly with 1 2 3 4 स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं, और के C4 ऑपरेशन है, और C4 ऑपरेशन के बाद नंबरिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, we can also do C4 2 ऑपरेशन, और वो C2 ऑपरेशन ये होगा कि C2 1 और C4 1 C4 2,
और जब आप ऐसा करेंगे तो 1 विल बी वेयर, राइट। डू यू थिंक C42 इज अ यूनिक ऑपरेशन, या इसका रिजल्ट किसी और ऑपरेशन से मिलता है? It's unique. यानी आप ट्राई टू गेट दिस शेप फ्रॉम दिस शेप बाय एनी अदर ऑपरेशन, यू नो, एनी अदर. How about rotating it by a C2 rotation? Yes, you're right. ये वही है, ठीक है ना, कि मैं अगर यहाँ पे अगर पहला मेरा नंबर 1 है, 1 is here, अगर मैं this is C41 rotation, this is C42 rotation, तो 1 यहाँ पे आ गया, ये फाइनल रिजल्ट है. अब मैं अगर C2 रोटेशन करूं तो फिर भी इधर ही पहुंच सकता हूं मैं. इसका मतलब है कि C42 is not a unique operation, it is equivalent to C2 operation, that's why we will just pick C2. C42 को कभी भी नहीं लिखा जाता. How about a C43 operation? क्या रिजल्ट होगा इसका? यानी C41 2 3, 1 is now here, 2 is here, 3 is here, 4 is here. Is it unique? Yes, it is unique. आप अपनी तरफ से लाख क्वेश्चन करके देखें, किसी और ऑपरेशन से, किसी और रोटेशन से आप स्ट्रक्चर ये वाली क्रिएट नहीं कर सकते. हाउ अबाउट C44? हाउ अबाउट C44? Where is the identical? हाँ, C44 को हम जरा यहाँ पे बना लेते हैं. C44 का रिजल्ट ये होगा कि we again 1 2 3 4. So C44 is identity. So हमने कहा कि A C4 axis generates how many operations? C4 operation and C43 operation. Just 2 unique operations. C42 is equal to identity. So we pick identity. Sorry, no. किसके इक्वल था ये? भूल ही गया हूं मैं. किसके इक्वल था? C2. There is a C21 with single bar. How about all these C2 axes जो कि इधर से पास करते हैं? Every C2 axis, whether it is C2 single prime, no prime, double prime, it only generates only one operation, C2 operation. क्योंकि C22 is identity. So that was about the proper rotation axis, जो कि geometric property है. It is an axis about which we can rotate structures at certain angles, and structures repeat themselves. They become indistinguishable than they are from their initial forms. ठीक है? अगर तो आपको इस वक्त ये सारी चीजें ऐसे सर के ऊपर से गुजर रही हैं तो it's very common. ठीक है? क्योंकि symmetry is all about visualizing things. चीजों को 3D में देखना है. There is a लिंक जिसे हम कहते हैं जस्ट गूगल सिमेट्री ऑटरबाइन, और वहां पे जाके आप उसकी जो गैलरी का ऑप्शन है उसको यूज करें और वहां पे 3D में स्ट्रक्चर्स देखें, इन ऑपरेशंस को करके देखें और यू विल गेट बेटर. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी डू. आरएफ इज हियर. कल हमारे ऑफिस आवर्स भी हैं. यू कैन ऑफ कोर्स कम देयर फॉर द डिस्कशंस. So Adiba, you have a question. I will take your question and then we'll end this session. सर हमने कहा C42 नहीं लिखते, उसकी जगह हमने जस्ट C2 कर दिया. आवाज ब्रेक हो गई. हाँ बिल्कुल. C42 has the same result as C2, तो हम C2 को ले लेते हैं क्योंकि दोनों में से किसी एक को पिक करना है. ठीक है, तो हम C2 कर लेते हैं. C44 is identity, तो हम कहते हैं कि बस आइडेंटिटी लिखेंगे. इसको डबलिंग दो दफा काउंट नहीं करते. Only unique operations will be taken. Okay. सर फिर वो जो ट्रायंगल वाला केस था दूसरी स्लाइड पे, उस पे जब हमने 2 बार जब हमें C32 मिला, हाँ, तो इसको भी तो हम सिंपल कोई और नेम दे सकते हैं. नहीं डिफरेंट है क्योंकि वहां पे आप देखिए इट्स एन ऑड नंबर
में रोटेशन हो रही है C3, n is odd. n जब odd होता है ना तो उस वक्त C, मसलन आप ये करें ना, आपका कहना ये है कि any Cn 2n should be equal to C2, आप ये कह रही हैं, है ना? ठीक है, तो वो n जब odd होता है ना तो ये रूल नहीं है, that's not a rule. ठीक है, यहाँ पे C32 is unique, C42 is not. वजह क्या है? यहाँ पे n इवन है, यहाँ पे n ऑड है। तो आप जनरलाइजेशन किए बगैर आप you do the operations and then analyze the structure कि whether they are unique or they are similar to some others. Right? Keep practicing. Symmetry is very interesting thing. It is highly applied thing. लेकिन शुरू में कुछ lectures में bear with me and Arif और रबिया भी हैं हमारे साथ. So we have 2 TAs. So you can of course consult them and do visit me during the office hours tomorrow. ठीक है? We start at 4. अगर आपकी timing match नहीं करती, so I think I can entertain some requests for the rescheduling. Okay? Okay. Enjoy your evening, and I'll see you on Thursday. Allah Hafiz.